दिखा दिया कि वो हिंदू हैं जो बैंड्स पहन के घूम रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट सामने आ गई कि वो शराब पीकर गए थे, मराठी जबान बोल रहे थे, और वो तमाम प्रूफ हो चुका जो कि खुद वेस्टर्न मीडिया और हिंदू राइटर्स ने इंडिया से बैठ के लिखा है। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इंडिया के अंदर भी सैफरॉन ब्रिगेड, इनके जो ज़ायनिस्ट्स हैं, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के खिलाफ एक शदीद गुस्सा मौजूद है। और सम ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन माइंड्स, चाहे वो सिख हों या हिंदू हों या दलित हों, शूद्र हों, ईसाई हों, क्योंकि ये सारी वो कौमें हैं जो कि बुरी तरह पिट रही हैं इस वक्त इस हिंदू ज़ायनिज्म के हाथों। और उन्होंने इतना खिलाफ लिखना शुरू किया है इस बात के कि खुद इंडियन मीडिया, इस बात के बावजूद कि जो वो दुनिया को प्रोजेक्ट कर रहे थे और वेस्टर्न मीडिया जो उनको सपोर्ट कर रहा था वो तो एंटी पाकिस्तान था, लेकिन उनके सेकंड टियर लीडरशिप जो थी मीडिया में, सेकंड टियर जो लिखने वाले थे, उन्होंने उनका सारा खेल एक्सपोज करके रख दिया। हत्ता कि कई जगहों पे तो जैसे हमने अर्ज किया, बीबीसी वगैरह ने भी ये रिपोर्ट्स दी हैं कि वो मुसलमान लगते नहीं थे, बल्कि इंडियन पुलिस ने भी कहा है कि कई जगह तो हमें इतने ब्लॉन्ड और फेयर स्किन लोगों से मुकाबला करना पड़ा कि हमें लगा कि ये इसराइली या वेस्टर्न लोग हैं। हाँ, ये इंडियन या पाकिस्तानी नहीं, इनकी शक्ल पाकिस्तानी नहीं है। और इंडियन हिंदू राइटर्स ने लिखा है कि ये मुसाद ऑपरेशंस है कि जो, और खुद उनको नहीं मालूम था इंडियंस को कि यहां मुसाद का एक सेंटर मौजूद है, जो इसराइली सेंटर निर्माना हाउस या व्हाटएवर हिज नेम वाज, और दे वर शॉक्ड टू फाइंड आउट कि इंडियन कमांडो, इसराइली कमांडोज मौजूद है वहां पे, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट और इंटेलिजेंस इक्विपमेंट वहां लगा हुआ है, टॉप ऑफ द लाइन, यस, टॉप ऑफ द लाइन। सो द गेम वाज एक्सपोज्ड प्रीटी क्विकली। सो व्हाट हैपेंड वाज कि जो प्राइमरीली बीजेपी का ये गेम था इस सारे फसाद को कराने का, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो काम किया था, उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। हम देखिए इसको बहुत कैटेगोरिक आपके लिए आसान कर देते हैं। एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये था कि बीजेपी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, उनके सर्विंग कर्नल पकड़े गए थे, पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन होने वाला था। और इंडियन पुलिस चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे आती है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो शॉर्ट टर्म में तो उनका काम यह था कि उस टॉप ऑफ द तमाम टॉप पुलिस ऑफिसर्स को एलिमिनेट किया जाए, वो जो उन्होंने कर दिया। और डायरेक्शन इस सारे तूफान की जो कि इनके हार्ड लाइनर्स और एक्सट्रीमिस्ट और इनके बीजेपी के खिलाफ हो रही थी, उस डायरेक्शन को गुस्सा तब्दील करके पाकिस्तान की तरफ किया जाए, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था इनका। इनका जो मिड टर्म ऑब्जेक्टिव था वो ये कि कांग्रेस की हुकूमत के लिए एक क्राइसिस खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन का सीजन आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। और जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ सख्त रवैया रखेगी उसके इलेक्शन में जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक। अब इन्होंने कांग्रेस को परेशान कर दिया इसकी वजह से। कांग्रेस का कोई इरादा यह नहीं है कि पाकिस्तान से जंग करने के लिए ये लोग आए, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंडिया अब जंग के लिए इस वक्त तैयार ही नहीं था। ये तो ड्रामा इसलिए मजबूरन इनको जल्दी में क्रिएट करना पड़ा, और किया भी बीजेपी ने, क्योंकि सारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ जा रही थी। सो कांग्रेस को मजबूरन अब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान देने पड़ रहे हैं। तीसरा जो उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था वो ये कि उनको पता है कि ओबामा आने वाला है। ओबामा ने आके कहा था कि मैं पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में जंग मुसल्लत करूंगा, तो उससे पहले ये ग्लोबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि तैयार होंगे यहां तैयार किया जा रहा है कि ईस्टर्न फ्रंट से हम हमला करेंगे, वेस्टर्न फ्रंट से ओबामा आएगा। Write my book for Pakistan, nor for India. It was a completely different project. The project was basically begun with my investigation of 9/11, of the acts of 11 September. When I discovered that the acts of 11 September was not an action by Osama bin Laden, nor by Islamic fundamentalists, but most probably an inside job by the American regime. When I discovered that, after 10 years of investigation, I began to investigate other terrorist attacks imputed to Muslim fundamentalists, like the London attacks of 2005, Djerba in Tunisia, Istanbul, Amman, and I wanted to write an anthology about the different attacks, comparing the attacks, their criteria, their characteristics, and try to find out whether there is a common thread between all these attacks. What India has said about Pakistan, about all this operation, is a lie from A to Z. There were no proper identification of the bodies of these people who were allegedly Pakistani. Now, identification is a much more complex thing than many people believe. First of all, there was nobody who identified or saw anybody of these people killed, neither in the hotels nor nowhere. So we have 9 bodies
which are alleged to be Pakistanis, but nobody has seen them being killed. There is no witness of their killing. So there is no witness that they have been in the locations where the attacks took place. I'm stating here a fact. It's not a conjecture. It's not inference. Nobody claimed the bodies, which is very important. Nobody claimed the bodies of these people. So we don't know. Maybe these bodies were brought from some region in India, from morgue, and presented as Pakistanis. I don't know. But we have to take that into consideration as a possibility. So we don't. Before the end of the attacks, as I said, took 59 hours. Before the end of the attacks, Prime Minister Singh of India already suggested that the attack was done by foreigners and suggested that it came from Pakistan. Now, how could he, before even the people were identified, allegedly identified, I say, before of that, could already state that? Not only that, he used the plural we. We will take certain measures, implying that his cabinet had already prepared the measures to carry out after the attacks. Some witnesses from Leopold said that the attackers looked European. They looked European. The Marcos, or the Marine operatives, which were one of the group who came to fight the terrorists, they are not mixed with the NSG. This Marine Corps, these Marcos, came from near Mumbai. And they are usually with beards and they are masked. So maybe this MP mixed these Marine Corps with the terrorists. Now, if such a mix-up could take place, maybe all the gunmen were part of the commandos. So we don't know. But this mix-up itself is very house or Chabad center. It is a more modest hostel for Jews and for Israelis who come to India, run by a rabbi, very modest home or house located in an unpaved street in Kolaba, which even the locals do not fight. It was not a very obvious building. So those who choose to attack this building did it very purposefully to make look like the Islamic people want to attack Jews. You have to go through many, many, many steps, particularly national TV. You don't get on air like this. And these people got on air after 5 minutes. So just ask it. Now, we don't know from where they called. We don't know who they were. And the TV basically didn't bother. However, this is one thing. Secondly, what is interesting is the TV anchor asked one of them, what are your aims? What are your demands? And these terrorists, which were prepared allegedly for I don't know how many years in Pakistan, had to consult somebody and ask, sorry, what should I say? What should I say? What should I say? And then, okay, we want to release all the prisoners. So he didn't know for what he was fighting. Now, of course, it's a joke, basically. But of course, from the transcript, with your permission, handler talking. How many magazines do you have? Put your magazine on burst mode. Each of you have 4, right? Put your magazine on burst mode. Put your magazine, your burst mode, each of you. You load the magazine and put your gun on burst when you have to fire. Sit in a manner that you may not be within the sight of someone coming in. Sit behind some sofa with the barrel of the gun sticking out. When you are throwing grenade outside, then one of you should stand behind the other. I mean, open the door and throw it, and don't throw it on your own feet. Now, do you know any handler talking to a commando not to throw the grenades on your own feet? I mean, come on. I mean, I'm not a military person. I'm a musician. But it is flying to the eyes. It is absolutely ridiculous. I'm sorry, it's just my guess, is that the Mumbai attacks was not only an operation of Indian forces, but a joint operation with America to forward American interest and the relations between India and America. Now, whether Israel was also involved is possible.